Hi, I'm Sneha Namanandi, and you're watching me on Bollywood Spy. बड़े अच्छे लगते हैं, एक आइकॉनिक शो। और इस शो का सीजन 2 जो शुरू हुआ है, काफी धमाकेदार एपिसोड्स आते हैं। और उसी शो की एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने हाल ही में शो से एग्जिट ली है, किरदार की भी एग्जिट हुई है। वेलकम स्नेहा ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस बड़े आइकॉनिक शो को साइन करना और इस कैरेक्टर को निभाना, मतलब जो एक्चुअली हम इमेजिन भी करें तो किस तरह से वो किरदार है और उसको ऑन स्क्रीन लाना, हाउ वाज इट फॉर यू, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। So, even after I left the show, I mean, after I exited the show, वो अभी भी मुझे नहीं लगता कि शिवीना मेरे अंदर से जा पाई है. मुझे नहीं लगता कि she's gone. I mean, मुझे even on the set ऐसा लगने लगा था सबको कि ये स्नेहा शिवीना है कि शिवीना स्नेहा है, समझ नहीं आ रहा. क्योंकि actually in my real life also I'm a little, energetic, enthusiastic about things. Things बहुत मेरे को I am that kind of a person who is an enthusiastic person. So, when I was playing the character, मुझे बहुत मजा आया यार, बहुत ज्यादा. इनफैक्ट जब मेरी कास्टिंग भी हुई थी तो 2 दिन में मैं कास्ट हुई थी. वो भी actually, okay, so I'm a huge coffee fan. I love coffee, and I was sitting at Starbucks, and after a very long time, I met the casting director of the show. वो ऐसे ही सामने बैठे थे और स्टारबक्स में I was just having my coffee. मतलब लिटिल डिड आई नो कि मैं ये शो का हिस्सा बनने वाली हूँ. और उन्होंने मुझे पूछा कि स्नेहा, यू वांट टू डू अ टीवी शो? I said, what is the show? He said, बड़े अच्छे लगते हैं. I said, oh, ये शो तो जब हम बच्चे थे तब आता था and all that, So he was like, yeah, would you want to do it? I said, of course I'll audition for it. And then घर जाते ही मेरे को audition script मिला and I auditioned for it. और 2 दिन में I was locked and I'm like, okay, now is this for real? एंड देन जब मुझे कैरेक्टर के बारे में और पता चला, सो इन द बिगनिंग क्या होता है कि आपको एक कैरेक्टर ब्रीफ दिया जाता है, फिर उसके बाद इट्स एन एक्टर्स जॉब कि कैसे उसको वो डेवलप करते हैं अपने ग्राफ के हिसाब से. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीन प्ले, द राइटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द स्क्रीन प्ले दैट वे. सो जब मुझे एक डेफिनेशन दिया गया था कि शिवीना एक स्पॉइल्ड ब्रैट है, गुड लुकिंग, गॉर्जियस एंड अ रिच किड एंड ऑल दैट, आई वाज लाइक, ओके, सो my first question was, is she a negative character? So they said, no, she's not negative. She's just a snob. She's just a rich, spoiled brat. तो मैंने कहा, अब यार इसको अगर कोई भी सुनता है इस कैरेक्टर को तो ऐसा लगता है कि रिच स्पॉइल्ड ब्रैट मतलब डेफिनेटली एरोगेंट होगी, डेफिनेटली लोगों को शी मस्ट बी वो लुक डाउन करती होगी लोगों पे, या फिर लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करती होगी, अपने आप को बहुत ज्यादा समझती होगी एंड ऑल दैट. बट एज सुन एज आई स्टार्टेड प्लेइंग द कैरेक्टर, मैंने उसको कोशिश की, बिकॉज मैं पर्सनली, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स में उतना इंटरेस्ट है नहीं. आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले पॉजिटिव ऑन स्क्रीन. तो जब मैंने स्टार्ट किया उसको प्ले करना, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वो थिन लाइन मेंटेन करूं जहाँ पे शिवीना नेगेटिव बिल्कुल ना लगे. शी शुड ऑलवेज बी दिस पॉजिटिव कैरेक्टर. सो मैंने वो रिच रखते हुए भी आई मेंटेन दैट इनोसेंस फॉर शिवीना, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि शिवीना को कोई हेट करे. सो इवन व्हेन आई एग्जिटेड द शो, मुझे समझ आया कि एक्चुअली द ऑडियंस like actually loved Shivina, right? So it was very, very overwhelming because when I was leaving the show, itne sare DMs, messages that please Shivi don't go. And more than Shivina, when they called me Shivi, it was like, oh my god, like I belong to the audience, so I could make that place in their hearts. So it was very, very, it was with a very heavy heart I exited the show, because Shivina was very close to my heart, is very close to my heart. In fact, all the actors on the show also are so close to me now that, they tell me now also that तू नहीं है फिर भी यहाँ है ऐसा लगता है. I'm like, oh my god, that's what I've earned. So yeah, that's the journey of क्या Shivina. बात है। नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि आपने काफी कुछ चीजें वर्कआउट की है, उस किरदार को लेकर इनोसेंस बरकरार रहे, लोग कनेक्ट कर पाए, एंड वो एक्चुअली वर्क किया है। हमने देखा है ऑन स्क्रीन की जिस तरह से आपने शिवना के कैरेक्टर को निभाया है, काफी नेचुरल। इट वाज नॉट लुकिंग लाइक कि आप एक्ट कर रहे हो, काफी कनेक्ट कर पाई ऑडियंस। इसीलिए दोबारा ऐसी बात आ रही कि आ जाओ वापस। लेकिन कहानी इस तरह से है कि जाना पड़ा। और जहां हमने देखा कि ऑन स्क्रीन तो हमने देखी आप सब फैमिली की केमिस्ट्री, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी बॉन्ड काफी अच्छा रहा है। हमने देखा काफी रील्स बनाते थे आप, नकुल, काफी कुछ चीजें मिस कर रहे होंगे। क्या कुछ ज्यादा मिस करते आप सेट से?
सबसे ज्यादा तो ऑफ कोर्स मैं शिवीना को ही मिस करती हूँ सेट पर, बिकॉज जब से शो शुरू हुआ है इट्स ऑलवेज बिन लाइक शिवीना की एंगेजमेंट, शिवीना की शादी, शिवीना का चूड़ा रस्म, शिवीना की ब्लिंग पार्टी, शिवीना को केक बनाना है, शिवीना वांट्स टू गो टू अलीबाग, शिवीना का ये, शिवीना का वो. सो लास्ट में मैंने आई हैड दिस इट माइट साउंड फनी, बट लास्ट में मैंने कहा इतना शिवीना शिवीना हो गया था कि इन द एंड इट वाज लाइक शिवीना का ही फ्यूनरल. आई एम लाइक ओके. मैंने कहा सब शिवीना का करके towards the end it was like शिवीना का funeral. So I in fact actually हम लोग as a family बन गए थे शो में, because सारे लोग इतने अच्छे हैं सेट पे कि I learned a lot from the entire team, because सारे seniors हैं मेरा तो first daily soap था, तो मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहेगा, बहुत दिल के करीब रहेगा, because it's my first daily soap. I'll never be able to forget it. And thanks to Ekta ma'am that she actually gave me this opportunity, to play such an amazing role. So सारे लोगों को मिस करती हूँ, सब कुछ मिस करती हूँ. ऑफ कोर्स रील्स बनाना मिस करती हूँ. हमारे फॉलोअर्स, जो फैंस, जो हमारे फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम फैमिली, वो हमें मैसेज करती रहती है कि we want to see more of your reels and all that. I'm like okay, all right, so we're not going to stop that. Nakul and me will continue doing that for sure. For our friends. Yes, we will. बस थोड़ा सा क्या हो गया था कि even after my exit from the show, Nakul fell ill and they were not shooting for a while, and then a lot of things. After that, काफी time, like I also got busy with my own thing. So yeah, but we'll definitely get back to doing the same. ओके वेल, हैशटैग राया को काफी पसंद किया जा रहा है, एंड राया वी नो राम कपूर एंड जो है किस तरह से है प्रिया ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन कैसे दोनों, और स्नेहा की कैसी बॉन्डिंग रही है नकुल दिशा की अगर बात करें तो? यार मैं क्या बोलूं, दोनों इतने प्यारे हैं, दे सो स्वीट. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा बॉन्ड मेरा बनेगा भी. एज आई टोल्ड यू ना कि इन द बिगनिंग आई जस्ट न्यू दैट, ठीक, ऑफ कोर्स आई मीन कैरेक्टर में काफी पोटेंशियल था शिवीना के, मुझे बताया गया था कि इट्स अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल रोल, एंड दैट्स व्हाई आई took that character. I did it. So the kind of chemistry with Ram Bhai, the kind of chemistry I developed with him, I think because that's also whatever performance I could deliver was also because of the actors opposite me. I believe it's not me completely. It's Ram, it's Nakul who could actually give me that liberty, that freedom, that counter reactions, because of which I could actually deliver what I could. And even with Disha, the kind of scenes I've had, like I think the chemistry between all three of us has been amazing and has been appreciated a lot, because I feel that off screen bhi wo log utne अच्छे हैं, and that's why they're leads of the show, and that's why they were doing so well. So मुझे लगता है it's also because of the off-screen bond that there was so much comfort between us कि बिना सोचे ही, मतलब ऐसे I used to just barge into them, hug them, and it was so real, because we didn't have that any kind of inhibitions or uncomfortability between between all three of us. We actually had a genuine, pure bond between us that we really genuinely cared for each other and liked being around each other. So I think that also adds on to how the kind of performance we could deliver. बिल्कुल सही कहा आपने. वेल, हमने देखा कि वही बॉन्ड शायद जिस तरह से जब आपका लास्ट डे था उसकी उसी वक्त यूनिट जो पूरी जो एक वैन है, वैनिटी वैन, यस, पूरी जो है पूरा डेकोरेट किया गया था, इतना अमेजिंग फेयरवेल दिया गया, वो मूवमेंट कैसा रहा स्नेहा के लिए? Oh my God. So मैं तो बहुत रोई हूँ उस दिन, बहुत रोई. सबसे पहली बात तो जब when आप अपने आप से कैरेक्टर डेवलप करते हो, it's like your own baby. I am Sneha, but when I was developing Shivina, कि शिवी ऐसे हंसेगी, शिवी ऐसे बोलेगी, या शिवी ऐसे चिल्लाएगी, ऐसे लड़ेगी, या whatever, ऐसे प्यार करेगी. So if you see, Shivina has been a very very loving character. Though she was not selfish. She was just like my world. This is my world. I want things this way. That's all. So उसमें कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है, right? She fought for her love. She fought for her love. She ran away for her love. She proved that that I will fight for my love, and she got
उसका प्यार उसको मिला. एंड देन लेटर ऑन शी वाज, वो एक ही कपूर फैमिली में लड़की थी जो who was not involved into any conspiracy or any kind of negativity. And she always opposed her family to not come between Ram Bhai and Priya Di, because she loves them and she knows they love each other and she knows the importance of love. So she was the only one who didn't wanted the separation of both of them. So मेरे रहते हुए तो कभी वो अलग नहीं होते, तो मेरे जाने के बाद ही ऑफ कोर्स उनको अलग होना पड़ा. So लास्ट डे जब मेरा डेथ सीन और वो सब, शिवी का डेथ सीन वो सब हुआ था, उस दिन मैं बहुत रोई थी, बिकॉज एज अ कैरेक्टर आई टोल्ड यू टू लेट शिवी डाई वाज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर मी. क्योंकि मैंने कभी सोचा, मैंने क्या, किसी ने नहीं सोचा था कि शिवी की एग्जिट इस तरीके से होगी शो में से. तो जब आप अपने सामने आपका पायर देखते हो कि आपको फ्यूनरल चल रहा है, ये चल रहा है, सो इट्स लाइक for an involved actor like me, I give my 100% when I do any character, even if it is like anything. I will put in my whole and soul into it and try to give my best. तो जब आप इन्वॉल्व होते हो तो कहीं ना कहीं आप मिक्स हो जाते हो. आपका कैरेक्टर स्नेहा एंड शिवी वर मिक्स्ड, राइट? सो लेटिंग अ पार्ट ऑफ यू गो is very very impactful. It was disturbing for me, in fact, for everyone, because I told you off screen bhi hum sabka bond itna mind blowing tha ki when I was on the pyro, like they were really crying. They didn't need any kind of misery. They were like, oh my god, oh why Shivi, and all that. So I took some time to get over it. And when I got back to the van and when I just wanted to calm down, that shit, man, it's done, it's over, and I see all this entire van is lit up with all these decor and beautiful things, and every person on the in the crew was there, and what a farewell, man. I was so overwhelming and I cried so much, and I've got beautiful memories of each person on this set. So, and then I've got some wonderful bites also from everyone. I will share it on my gram very soon, and I have like a very beautiful video. I'm not able to put it because I think I'm not ready to accept that I'm no more in the show. So yeah, and then they had made this beautiful T-shirt for me, jahan pe sabke like how in school messages. So not only the actors, I would say, like the stylist, the spot dada, the makeup artist, the hair stylist, everybody has given me so much love on the set, and सबके bites, सबके messages, सब कुछ है मेरे पास, and I think that I'll cherish forever. I have, in fact, मैं touch में भी हूँ सबके, 2-3 दिन में एक बार तो बात हो ही जाती है हमारी. So I think so I think my earning is that my spot dada messages me like 2-3-4 दिन में एक बार की, शिवी मैम आपके बिना सेट सुना लगता है, we miss you. So I'm like, okay, fine, now this is what I wanted, that actors, of course, we spend maximum time with them, but usually like the people who are behind the camera, if they are like missing you or they give you that kind of respect, I think that's what is a reward for me. So yeah, it was overwhelming, it is heartbreaking, but yeah, it's a character end of the day, and that's what I told myself, and I moved on, क्योंकि मैं नहीं छोड़ पा रही थी शिवीना को. नहीं, एक्चुअली मुश्किल हो जाता है काफी. वेल स्नेहा, काफी कुछ फैंस का जो है प्यार जो मिला है शिवी को, तो क्या कुछ मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स कुछ शेयर करना चाहे आप हमारे साथ, जिस तरह से फैंस का शुरुआत से जो एक दौर बना रहा शिवीना को लेकर, प्यार बना रहा? So मुझे पता एक्चुअली सी, मुझे जितना भी टाइम मिला है, मैंने अपने सारे डीएम्स फैंस को, जब मैंने शो एग्जिट किया था, बहुत लोगों को मैंने रिप्लाई किया. आई वेंट टू माय डीएम्स एंड बिकॉज आई थिंक कि वही लोग हैं जो हमें बनाते हैं, क्योंकि वो नहीं है तो आई डोंट थिंक हम परफॉर्म किसके लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए तो नहीं कर रहे. सी, एंड ऑफ द डे अ लॉट ऑफ पीपल वुड से दैट मैं तो खुद के लिए कर रही हूँ, बट नो, एंड ऑफ द डे यू एंटरटेनिंग पीपल एंड यू आर डूइंग इट फॉर देम. सो उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक दैट हम कुछ भी है. तो मैंने कोशिश की कि हर तो नहीं बोल सकती, बट मैक्सिमम डीएम्स को जब मुझे टाइम मिला, मैंने कोशिश की उनको रिप्लाई करने की और बताने की, बिकॉज एवरीबडी हैड दिस क्वेश्चन. कुछ लोग गुस्सा भी थे, आप ऐसे कैसे शो छोड़ सकते हो, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, हम लोग आप इतने पसंद हो, आप कैसे, मैंने कहा डांट के बता रहे हो मुझे ये चीज कि आप क्यों जा रहे हो. सो आई एम लाइक, अब
है, क्रिएटिव कॉल्स होती है, कुछ चीजें होती है, और भी बहुत कुछ चीजें होती है. सो आई ट्राइड एंड काफी उस मोमेंट पे मुझे पता चला. सी एवरी डे यू आर वाचिंग अ शो, यू नो दैट ओके आज शिवीना आएगी आएगी आएगी, एंड Right. समडे यू गेट टू नो कल से वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू, वी आर नॉट गोइंग टू वॉच हर. So that's when the fans and सारे लोग बाहर निकले, and I'm like, okay, so many people actually were liking me and loving me for Shivina. I didn't know that because they started protesting later, right? Of course, when they got to know. Because जब तक देख रहे थे वो comfortable थे कि Right, हमको तो right. दिख रही है शिवीना रोज. But जब पता चला तो they were questioning that no, this is not done and this is not acceptable and all that. So I felt, wow, now this is something I've earned. So I want to like protect it and keep it. And I told all my fans that, be with me throughout my journey, not only for Shivina, because I'll be playing a lot of other characters, which I will want people to love. सो यही मैंने कहा है कि यार मेरे को सपोर्ट करो, एंड मुझे इनकी प्यार की वजह से ही मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाती हूँ, मुझे लगता है. वरना तो हर एक्टर ही अच्छा करता है. बट व्हेन यू नो दैट यू द पीपल आर विथ यू, योर फैंस, योर इंस्टाग्राम फैमिली इज विथ यू, सो आपको और लगता है कि यार और अच्छा करते हैं. सो दैट यू गेट मोर अप्रिसिएशन फ्रॉम योर फैंस एंड दे स्टिक टू यू, दे आर विथ यू. तो क्या यही बोलूंगी यार कि साथ में रहो. और शिवीना से बहुत लोगों ने मुझे ये भी मैसेज किया, यू आर सो मच लाइक मी, यू आर सो मच लाइक मी. सो 16 to 24 एज जो एज ग्रुप है, and then nannies and हाँ. like above 60, तो ये लोगों से ज्यादा प्यार मुझे मिला है. Like even when I am at Starbucks or wherever, like this a lot of teenagers, they come and they're like, we love you so much and you're so much like us, you talk like us. I'm like, okay, so that's I like that. It's nice. And the best part is that कोई भी I don't like calling किसी को भी fan वैन. जिसको भी मैं पसंद हूँ वो जब आता है मेरे पास या बात करता है, तो मैंने देखा है द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज शिवीना का जो कैरेक्टर था वो काफी ऐसा सा था, वेरी फ्रेंडली. So Friendly. nobody has ever come and how like normally fans wherever they come they're like, hey, hi, they meet me like that. So nobody is like, excuse me, can I have a picture with you? But hey, can I have a picture? They start talking like me. I'm like, wow, okay. So I think that's the connection I've built with the audience, and I love it. That they don't have to hesitate before like asking me for a picture or for a reel or anything. They're like, hey Shivi, can you like, I'm like, okay. So Shivina is like even now it's become one of my favorite names also now, Shivina. So yeah, that's क्या बात है. वेल अभी क्या कुछ कर रही है स्नेहा? फिलहाल ब्रेक टाइम चल रहा है या फिर कुछ प्लान कर रही है वापसी के लिए स्क्रीन पर? ये जरूर फैंस जानना चाहेंगे. आप जरूर कुछ शेयर करें, क्या कुछ कर रही है फिलहाल स्नेहा? तो सबसे पहले तो मेरी एक फिल्म आ रही है. वो या सो वी शॉट इन बनारस. जब मैं बड़े अच्छे कर रही थी तभी शूट किया था हमने. So that's been approved by MX and Amazon. So I think July or August में that film is going to be out. It's a 1 hour film. It's a nice film. You'll see a different version of Sneha completely because वो एक बहुत ही raw film है. बहुत ही स्मॉल टाउन वाला लुक है, नो मेकअप एंड ऑल दैट. वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर फॉर मी अगेन because Shivina was completely different. And apart from that, also there is a web series which I did already. The platform has not been announced. It's a 6-episode series. That's also again I was the main protagonist. So that these are the two things which are going to like come out like in the pipeline. But on my personal thing, what I'm working at right now, there are a lot of shows which have been offered, but I'm still figuring out. But right now I'm working on my personal brand, which is the Pet Station. It's a brand for dogs and cats. So I started this last year. It's been a year now. I started as like I was the sole proprietor. I started it all alone, solo. It was a very small place when I started it. And so now this year we're planning to expand it, like for a bigger place. I'm a big cat and dog lover, right? So I wanted to do something for them because we go and have all the fun. उनके लिए ऐसी जगह है नहीं ज़्यादा. So I'm looking for a bigger place. I'm planning to expand. So within 6 months, I think I'll be able to have a big place for them. So that's what I'm working on because it's not an easy thing to do. I sleep very late. I wake up early. I'm really working a lot on that particular project because it's like my dream project as an entrepreneur. Of course, my acting that will continue, but
this is like going to be forever. So I want to like I'm working on that right now. Till the time I don't spot the right project for me, I will keep continuing to work on my brand, so that at least meanwhile I develop that and execute it the way I wanted to. ओके वेल काफी कुछ चीजें से आप कर रही है। हमारी सारी विशेष आपके साथ ही है। एंड बड़े अच्छे के बाद भी और भी ओटीटी पर बहुत जल्द आई थिंक दिखने वाली है आप। क्या बात है, काफी अमेजिंग न्यूज आपने दी है। वेल आपके फैंस जरूर खुश होंगे, आपको अलग अंदाज में देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। क्या कुछ आप जाते जाते अपने फैंस से कहना चाहेंगी स्नेहा? मैं कहना चाहूंगी कि ओके सो अभी जो मेरा जोन चल रहा है उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि क्या है। सो have a goal in life, have a vision in life, I would say, and keep working towards it, because अगर आपके पास एक गोल नहीं होगा, जैसे मैंने सेट किया अपने लिए पेट स्टेशन की मुझे उसको बहुत बड़ा करना है एंड ऑल दैट, एंड आई वांट टू बी लाइक अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस। मैं अपने आप को कभी सक्सेसफुल बोलती नहीं हूँ जल्दी, बिकॉज इट नेवर एंड्स, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो विजन रखिए, गोल रखिए, डोंट हैव अ लेड बैक एटीट्यूड। अपनी चीजों को डीले मत कीजिए, जो भी फील करते हो आज करो, बिकॉज कल का पता नहीं है। सो लिव टुडे बट थिंक अबाउट टुमारो ऑल्सो, एंड हैव फन। सपोर्ट मी। आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम आईडी पता होगा, स्नेहा नामानंदी। कीप इन टच। मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ जब भी मुझे टाइम मिले, एंड दैट्स ऑल। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू।